Hi, good morning. This is Kavita Kundra, and we are starting with MSCDFSM Physiology, chapter Respiration, last part. So we are starting with regulation of respiration. So I hope you have gone through earlier slides. So just check it out and how it's not very difficult, but you need to study it deeply to understand it properly. Okay. So regulation of respiration. So it is a rhythmic process. The basic rhythm is controlled by respiratory centers located in medulla and pons of brain system. The pons is a neutral structure linking the medulla oblongata and the cerebellum with the midbrain. What is medulla? We all know medulla is white fatty substance that forms a medullary sheet around the axis cylinder of some nerve fiber. Within the medulla, paired group of neurons known as inspiratory center. The inspiratory center send nerve impulse along with the phrenic nerve to diaphragm and also along the intercostal nerves. Inspiratory muscle contract, initiating the inspiration. Phrenic nerve stops and muscle of respirations relax. The elastic recoil of lungs in chest wall lead to expiration. So you just have to write down this much only. And what are the neural controls of respiration? First point, you need to do it as per earlier discussions. You need to do it in points so that the examiner knows that you know. If you write in paragraph, it won't work. It originates in respiratory center and signals are transmitted through the phrenic nerve to excite the diaphragm. Second, it produces contraction of diaphragm. So, neural control of respiration, how it works, it produces the contraction. So because of that, the diaphragm contracts, and if diaphragm contracts, it's expand the chest wall and lung, and if it is expanding, then it is increasing the airway pressure. So two neural mechanisms that control the respirations are, one is voluntary, one is automatic. Voluntary is located in cerebral motor cortex. It sends impulse to the respiratory motor neurons via corticospinal tract. So CST, you need to remember that. Automatic system, automatic center are located in medulla and pons. The earlier we have marked in red, right? And the motor outflow from the system goes to the respiratory motor neurons located in lateral and ventral portion of the spinal. Next, it is continuous above the brainstem and involved in carrying the information from body nerves to brain and signal from brain to body. Medullary center, the respiratory center is a collection of highly specialized cells. So there are specialized cells that collect and make that respiratory center. So there are two groups of neurons, one is dorsal, one is ventral. Dorsal and ventral according to the position. Dorsal's respiratory group is source of rhythmic drive to phrenic nerve, and the ventral group has two divisions, the cranial and caudal divisions. The cranial nerves are made up of neurons that provide accessory muscle of respiration, and the caudal division is made up of neurons that provide inspiratory and expiratory drive. The respiratory center initiates the nerve impulse that pass from the brain in phrenic nerve to diaphragm and intercostal muscle. The muscle gets contract, and this increases the capacity of the thorax cavity and inspiration starts. The second group of neurons in the medulla, the expiration center, appears to functions during forced expiration, stimulating intercostal and abdominal muscle to contract. Pontine center, the rhythmic discharge of neurons in the respiratory center modified by the center in pons. If the vagus nerves and inferior portion of pons are destroyed, the inspiratory neurons discharge continuously, and a sustained contraction of inspiratory neurons discharge continuously and sustained contraction of inspiratory muscles. The arrest of respiration in the inspiration is called apneusis. So need to learn the term. Just write it in bold. Apneusis. What is apneusis? The arrest of respiration
in inspiration. The area in pons responsible for apneusis is called apneustic center. So you need to remember apneusis and apneusic center. The area that prevents apneusis is called pneumotoxic center, and it controls the exaggerated activity of apneustic center and produces a rhythmic respiratory. What are the roles of other factor? One is vagus nerve. Vagus nerve, we all know this is responsible for parasympathetic calmness of the body, and its spirituality, it is the most important nerve, because vagus nerve, it is in active form, it decreases all the diseases. If you work on your vagus nerve, no diseases can touch you. So just look into it. It is very, very important system of your body. The rhythm and the depth of respiration are controlled by reflexes from vagus nerve. When lungs inflated, there is an arrest of inspiration, and when lungs are deflated, the opposite effect obviously is observed. The reflex is called Herring-Brewer reflex. When both the vagus nerve are cut, then respiration becomes slow. If the vagus nerve is cooled and 0 degree, inflation of lungs did not cause inhibition of respiration. But if vagus nerve is warmed, the inflation did not inhibit inspiration. The later effect is called paradoxical reflex of head. Vasomotor center and cardio inhibitory center. The vasomotor center excites the respiratory center. Pulmonary ventilation is decreased, the pulmonary ventilation is increased. That is why during respiration, heart rate and BP may vary. Reflex action. Below mentioned reflex actions are associated with respiratory process. Cough reflex, hiccup, sneezing, yawning. You all know these. If cough reflex is khansi, hiccups is your hichki, sneezing is your cheek, and yawning is your ubasi. Chemical control of respiration, tension of carbon dioxide and oxygen in blood. In the carotid body and aortic body, the cells are very sensitive to carbon dioxide excess. When carotid body and aortic body are stimulated, the impulses pass to the respiratory center in medulla. तो impulses कहाँ चली जाती हैं? Respiratory centers को impulse respiratory center में चला जाता है medulla में through the branches of vagus and gasopharyngeal nerves and stimulate respiration. तो उसकी वजह से को स्टिमुलेट किया जाता है. इफेक्ट ऑफ चेंजिंग, ये हम नहीं करते हैं, दिस इज एक्चुअली ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ योर बॉडी. इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑन रेस्पिरेशन, द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेशन. अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गया तो दैट मीन्स रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा. इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज द ब्लड pH दैट स्टिमुलेट द पेरिफेरल सेंसरी receptor. They respond by sending the more impulse to respiratory center. They increases the respiration rate, and hence the total pulmonary ventilation is increased and adjusted, and alveolar CO2 remain constant. Accumulation of carbon dioxide lead to acidosis. So इसकी वजह से आपका acidosis भी होता है. किसकी वजह से? अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया. Respiratory acidosis occurs when the lung fail to eliminate sufficient amount of carbon dioxide. तो acidosis इसलिए भी है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है और एलिमिनेट नहीं हो रहा है. Excess carbon dioxide combined with water and forms carbonic acid that increases the blood acidity. Effect of hydrogen ion concentration during acidosis. When there is excess retention of carbon dioxide in the body, the rate of acidosis increases and bonds to eliminate carbon dioxide. As more carbon dioxide passes from stream into the lungs, the hydrogen ion concentration of the blood is lowered. During alkalosis, the rate of respiration decreases and the body tries to increase the carbon dioxide tension. As more carbon dioxide is accumulated, hydrogen ion concentration is increased. Effect of oxygen tension. The respiratory system is much more sensitive to carbon dioxide excess to oxygen deficiency. If oxygen tension reduced to 13%, there is no appreciable changes on respiration. Then, internal respiration, the interchange of gases between the blood and cell. तो internal respiration क्या है? एक तो external respiration है कि आपका ऑक्सीजन अंदर जा रहा है and carbon dioxide is coming out of the body. Internal क्या है? क्योंकि सेल और ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. The interchange of gases between the blood and the cells of the body
इज़ इंटरनल, जो बॉडी के अंदर ही एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन ब्लड और सेल में एक्सचेंज हो रहा है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बाहर आता है? थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सपोज कीजिए कोई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गया, जाके वो ब्लड में मिला, ब्लड लेके गया जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, अलग अलग सेल्स में, टिश्यूज़ में गए, और वहाँ पे सेल्स के अंदर अब उसे घुसना है, ठीक है। ऑक्सीजन को जाना है अंदर, और वहाँ पे जो प्रोसेस हुई है उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है सेल का, उसको ब्लड में वापस आना है बॉडी से बाहर जाने के लिए। तो वो एक्सचेंज जो कि ब्लड और सेल में होगा इनसाइड द बॉडी, उसे कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। The exchange of gases between the blood and tissue takes place between arterial end of capillaries and tissue fluid. The process is called diffusion. और कैसे जाएगा वो, उसका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई यहाँ पे कोई आपके आउटलेट्स नहीं बने हुए हैं, वो डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़ मतलब धक्के से वो बाहर जाएगा। Diffusion occurs from higher concentration of oxygen in the blood to the lower concentration in tissue fluid. तो डिफ्यूजन कैसे होगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने कहाँ से कहाँ जाना है? ब्लड से सेल्स के अंदर जाना है या टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर जाना है। दिस इज क्लियर। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड इज कैरिड फ्रॉम लंग टू टिश्यू। ऑक्सीजन कंबाइन विद किसके साथ मिलेगा ब्लड के अंदर? क्या होता है? Hb होता है। तो ऑक्सीजन मिला हीमोग्लोबिन के साथ, तो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक्स इजीली टू रिलीज ऑक्सीजन। जब वो अंदर जाएगा टिश्यूज़ के, तो वो इजीली ब्रेक होके ऑक्सीजन दे देगा, और ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है, ठीक है। टिश्यू सेल्स नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड एंड देन टू सेल इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये होता जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि कोई रुक जाएगा या कोई ट्रेन है या रुक गई, स्टेशन आया तो क्या होगा, ये चलता जा रहा है। नहीं तो अगर ये रुक जाएगा तो आपकी बॉडी भी स्टॉप हो जाएगी। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड एंड देन टू सेल इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। द एक्टिव सेल रिसीव्स मोर ऑक्सीजन। तो एक्टिव सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। एक्टिव सेल्स कौन से? जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। When the cell become very active, the concentration of carbon dioxide increase. वो लगातार वर्क करते जा रहे हैं, जैसे हार्ट है लगातार वर्क कर रहा है, ब्रेन है लगातार वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जब वो वर्क कर रहा है तो क्या बनता जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनता जाएगा। दिस हेल्प्स इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द H ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। बाय डिफ्यूजन इट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल इनटू ब्लड, और ये एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग फटीग। बॉडी नीड एडजस्टमेंट्स। अब फटीग मतलब कि थकान, जब भी थकान होती है बॉडी एडजस्ट करती है ताकि उसकी एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए। Where there is less energy in the body, it also occurs due to acidosis of brain. Hypoxic hypoxia. It is hypoxia resulting from defective oxygenation of blood in the lung. It is problem in high altitude where PO2 is normal. Anemic hypoxia due to anemia where the arterial PO2 is normal but the amount of Hb to carry oxygen is reduced. Ischemic hypoxia, it results from slow peripheral circulation in the blood flow of tissue is so slow that an adequate amount of oxygen is not delivered to it in spite of having a normal PO2 and Hb concentration. The liver and brain are damaged by stagnant hypoxia in congestive heart. हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, यहाँ पे क्या टॉक्सिक एजेंट है? हिस्टोटॉक्सिक मीन्स टॉक्सिक एजेंट्स. Oxidative enzymes are poisoned, hence tissue cells cannot utilize oxygen supplied to them.
cyanide poisoning is one of them. Artificial respiration. When respiratory muscles are not able to provide adequate ventilation of lungs, it is given either by manually or equipment. First step is to clear the air way or passage from nose to mouth to lungs. Artificial respiration by equipments. Cabinet respirations when respiratory are paralyzed बाय एन इंजरी. कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका पैरालाइज हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इन द पेशेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, तो वो एक बॉक्स में होते हैं एंड हेड इज़ आउटसाइड. तो आपने सुना होगा वेंटिलेटर पे रखा गया है, उनकी रेस्पिरेशन नहीं चल रही है, वेंटिलेटर पे हमें 1 या 2 दिन और रखना पड़ेगा. तो इस तरह की जो चीज़ें, दैट इज़ अ कैबिनेट रेस्पिरेशन. By lowering and raising the pressure, respiratory movements are induced. Intermittent positive pressure and lung inflammations. The tube is inserted to the trachea. वो ट्यूब जो है इंसर्ट होगा आपके ट्रैकिया में to prevent the secretion entering into the lungs. जो आपकी secretions हैं, कौन से secretions? जो आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो secretions आपका lungs में नहीं जाना चाहिए. The tube is connected to the positive pressure pump so that inflate the lungs by blowing air into them. वो clear passage होना चाहिए, तभी आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगा. Artificial respiration by manual method, हमें मालूम है mouth to mouth respiration. If there is no instrument is available, then one's own lung may be used as positive pressure pump. हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे सामने कोई बेहोश हो गया है या उनको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो गई, अनकॉन्शियस होते हैं, तो सबसे पहले हम, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं. दैट इज़ वेरी गुड फॉर सेविंग द लाइफ. एक्सटर्नल कार्डियक मसाज. इफ रेस्पिरेशन स्टॉप्स देन द हार्ट विल ऑल्सो स्टॉप beating due to the lack of oxygen. Then external cardiac massage is given to restore circulation of blood. So this is it. I hope you understand all, and please revise for your exams. This is the last part only. Thank you so much. I hope you will study hard and you will clear your exams. Thank you. The chapter is complete, and don't worry about the IGNOU exams. If you are still doing it and still you have not cleared the exams or postponed the exams, so there are always chances, just with some late fees. After 5 years you can again rejoin give the exams, and if you have already done that, you have not cleared the exam, then also you will get the chance to clear it. So don't worry, do it nicely. Take out 10 years paper and just check which questions are important. Mark it and do it, and you will do it. Thank you so much, and don't worry about your percentages and all. Nothing matters as much as your experience. Take care, stay safe, stay protected. Bye-bye.